Good morning students, welcome to Commerce Canpit Odisha. Today we'll start with remaining part of MCQ discussions of economics. So आमे आज देखिबा chapter number 2, that is theory of demand and supply. Theory of demand and supply. First हमें देखिए cross elasticity of demand relates to price of one good and demand of dash good ना another related good. तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रे दीटा जिनस कंपेयर होथिला गोटे होथिला प्राइस ऑफ वन गुड with the demand of other good, price of one good and demand of another good, demand of another good. एबे आसिला कोन लॉ ऑफ डिमांड. व्हाट डज लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन अस? लॉ ऑफ डिमांड कोन बुझौची हम? लॉ ऑफ डिमांड कोन एग्जैक्टली बुझौची ना एक्सप्लेन्स द क्वालिटेटिव रिलेशनशिप. व्हाट इज क्वालिटेटिव रिलेशनशिप? माने बिहेवियरल रिलेशनशिप बुझौची कोन प्राइस ऑफ डिमांड रो बिहेवियरल रिलेशनशिप. जदि से कोई थांदा क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप तो सेडा कोन हे थांदा ना पर्टिकुलरली यूनिट्स रे मेजरेबल हे थांदा, बट दिस इज क्वालिटेटिव relationship. Then exceptions to law of supply is agricultural products, scarce goods and labor market. एडा होची गोटे important questions. What is law of supply? ना गोटे producer point of view रो कोडा ठीक कोडा wrong सेडा होची कोन law of supply. Then comes an individual demand curve slopes downward to right because individual demand curve shape कोन slopes from left to right. एडा कोन पे ना income effect of fall in price, substitution effect of decrease in price, diminishing marginal utility and all of the above. तापरे demand can be defined as dash. Demand can be defined as desire and willingness to buy. Demand रो meaning कोन desire plus willingness to buy माने पर्टिकुलरली गोटे जिंस किनेबार इच्छा आ तार किनेबा पई पैसा रहिबार से दीडा जिंस. तापरे in case of normal goods the income effect is dash. The income effect is positive. Normal goods case रे income effect टा कोन positive काहेंगे ना जेहेतु प्राइस बढ़िबो जेमिति प्राइस कमेबो all these things the price and the goods relationship is always positive in case of normal goods. Luxurious goods पे अलगा, speculative goods पे अलगा, but normal goods पे the income effect is always positive. Then the law of supply creates its own demand was put forth by whom? ना JBC जो अछंदी तांके कहिसंदी कोन law of supply creates its own demand. law of supply द्वारा हमर कोन क्रिएट होची ना own demand टा क्रिएट होची. Then cross elasticity of demand relates to substitutes and complementary goods. Cross elasticity of demand relates to what? Substitute goods and complementary goods. Substitute goods माने कोन जो goods गुडा गो गुटे गुड रो बदल रे यूज हे परिबो. Complementary goods माने कोन जो goods गुटे goods साथे simultaneously यूज हे परिबो. So these things are called the cross elasticity of demand. Then exceptions to law of demand are conspicuous goods, giffen goods, share, speculative market, all of the above. law of demand माने कोन ना प्राइस जेमती जेमती बढ़िबो डिमांड सेमती सेमती कमिबो. बट से जिनसर एक्सेप्शंस कोन कोन हमर conspicuous goods, giffen goods, share, speculative market and all of the above. ए सब जिनसरे प्राइस सहित किछि लिंक नै, डिमांड ता जेमती रहय कथा सेमती रहउछि. We cannot produce obviously everything. सब जिनस हम प्रोड्यूस करि परियन. There is always a limitation. Then in case of a straight line demand curve meeting the two axes, the price elasticity of demand at the midpoint of the line would be 1. In case of straight line demand curve meeting two axes, the price elasticity of demand of the midpoint of the line would be 1. माने से गुट्टे जिनस कहउछि straight line demand curve denotes what? ना unitary elastic demand. Unitary elastic demand को बुझाए. जो straight line demand curve अछि सेटा कोन बुझाए? Unitary elastic demand को बुझाए. तापरे in case of inferior goods the income elasticity of demand is negative. आमे देखिथिलु कोन normal goods case रे the elasticity of demand is positive, but एडी कोन inferior goods रे the elasticity of demand is negative. Then elasticity of supply refers to the degree of responsiveness of supply of goods to change in its price. माने degree of responsiveness of supply of goods to change in its price. हैला yes माने कोन माने गोटे प्राइस को धरिकी सप्लाई केंदी चेंज हबो, प्राइस केते थिला को सप्लाई करले हम पे बेटर हबो से सब जिंस. Then the law of supply creates its own demand was put forth by JBC. तापरे effective demand माने कोन aggregate demand is equal to aggregate supply. Effective demand माने कोन aggregate demand is equal to aggregate supply. तो आ गोटे जिंस अछि demand is equal to supply माने कोन
ना सेडा होची कोन हमर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बट इफेक्टिव डिमांड माने कोन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई देन exceptions to law of demand कोन अगेन हम ऑलरेडी डिस्कस कर देछु conspicuous good given good share speculative market etc all of the above क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रे कोन होची दीडा जिंस कंपेयर होची प्राइस ऑफ वन कमोडिटी एंड डिमांड फॉर अनदर कमोडिटी ए दीडा जिंस रो जहा भी रिलेशनशिप ता कंपेयर होची देन law of demand explains dash law of demand explains qualitative relationship again same जिंस law of demand explains the qualitative relationship तापरे the law of demand enumerates that increase in price results in decrease in quantity demanded law of demand कोन गोची हम law of demand कोची प्राइस जेते इंक्रीज हबो डिमांड सेते डिक्रीज हबो प्राइस जेते डिक्रीज हबो डिमांड सेते इंक्रीज हबो ए चारटा जिंस को बुझाए कोन लॉ ऑफ डिमांड इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी डैश द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी पॉजिटिव सब्स्टिट्यूट गुड्स केस रे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जोडा আছে সেটা सब बेले कोन पॉजिटिव रहे देन इक्विलिब्रियम स्टेट केबे अचीव हे पारिबो ना इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व इक्विलिब्रियम स्टेट माने कोन जदी डिमांड कर्व टा हेडा तो सप्लाई कर्व टा हेडा दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम माने जोडे इंटरसेक्ट होची पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम काहे इंटरसेक्शन पॉइंट टा इंटरसेक्शन रो मीनिंग कोन रोचे हमको ना डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई so demand is equal to supply is the point where we denote it is the point of equilibrium in the market that's why curve basis रे जतला मैं determine करछु ना intersection of demand and supply curve is the equilibrium state intersection of demand and supply curve is the equilibrium state then a supply curve parallel to x axis means the product supply is unlimited माने जदी supply curve टा एडा होची x axis एडा होची y axis तो जदी एमती अच्छे कहले अनलिमिटेड सप्लाई माने सप्लाई डा केबे भी सॉरी बन इट इज अनलिमिटेड सप्लाई देन a typical demand curve will normally have a negative slope a typical demand curve will normally have a negative slope then complementary goods are those goods which are consumed simultaneously complementary goods माने कोन simultaneously consume माने एडा सेडा मिसिगिरी normally consume होय then goods which are perfect substitutes of each other will have elasticity of substitution is infinite infinite माने कोन कोडा भी का रहले substitute हे पारिबो that's why it is known as perfect substitute जेहेतु perfect substitute तो तार value केते रहउची हमरा infinite रहउची the goods which are perfect substitute of each other will have es elasticity of substitution केते रहउची infinite then if two goods are not substitutes at all for one another the elasticity of substitution will be dash the elasticity of substitution will be 0 तो ए देडा होचे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन elasticity of substitution माने कोन ना चेंज केते जल्दी माने केते अधिक थरे केते फ्रीक्वेंटली गुटे जिंस आउडे जिंस रा सब्स्टिट्यूट हे पारिबो तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट माने कोन गुड जिंस रा आ गुटे जिंस बहुत आराम से सब्स्टिट्यूट हे पारिबो तो दैट्स व्हाई elasticity of substitution is infinite then if two goods are not substitute at all for one another जदी गुटे जिंस रा आ गुटे जिंस सब्स्टिट्यूट आगा नै तो आ गुटे जिंस सब्स्टिट्यूट आगा जतळ हे पारिबोनी तो सेडा कोन हबा मन that the elasticity of substitution will be 0 elasticity of substitution will be absolutely 0 ठीक अछि thank you so much in the next class we will be continuing with the chapter market thank you